ओके। अब लास्ट सेशन में हमने चार्ट ऑफ अकाउंट्स क्रिएट किया था एंड उस चार्ट ऑफ अकाउंट्स को हमने कंपनी कोड से असाइन किया था, करेक्ट? इतना समझ आ गया आपको या इसमें कोई डाउट्स है? नो सर, समझ आ गया। बस वही तब आप कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है। ओके, ऑलराइट। अब नेक्स्ट step is to define the asset classes. अब हमने एक एग्जाम्पल लिया था डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के लिए, राइट? We took example of this table which was purchased for 10,000. अब हम इसको थोड़ा और अकाउंटिंग वे में लिखते हैं। लेट्स से table purchased for office reception from wood stores private limited worth rupees 10,000 on 15th of May. अब this table is our asset. जब हम इसको मेंशन करेंगे तो वी विल नॉट जस्ट मेंशन इट एज टेबल, राइट? बिकॉज एक कंपनी में मल्टीपल टेबल्स होंगे। वी विल स्पेसिफिकली मेंशन दैट दिस टेबल इज फॉर ऑफिस रिसेप्शन। वी विल से हेड ऑफिस रिसेप्शन। अब ये टेबल हमने किससे परचेज किया था? वुड स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड से। द प्राइस वॉज 10,000 रुपीज एंड द परचेज डेट वॉज 15th of May. Now, this table belongs to furniture and fittings, right? इस टेबल का नेचर इज फर्नीचर्स। अब सिमिलरली जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो, आपको मल्टीपल नेचर ऑफ एसेट्स दिखते हैं उसमें, राइट? फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स हो गया, प्लांट एंड मशीनरी, सॉफ्टवेयर्स एंड लाइसेंसेस, देन लैंड एंड बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट्स, देन गुडविल, करेक्ट? पेटेंट्स हो गया, देन ट्रेडमार्क, कॉपीराइट्स। ऐसे ही मल्टीपल आपको एसेट क्लास मिलते हैं बैलेंस शीट में, करेक्ट? यस सर। अब दीज आर नेचर ऑफ एसेट्स। जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते थे ड्यूरिंग आवर कॉलेज टाइम, हम इसको एसेट में लिखते थे, बट दिस इज नॉट एन इंडिविजुअल एसेट। अगर फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स है, एक कंपनी के पास थाउजेंड्स ऑफ फर्नीचर्स हो सकते हैं, राइट? एक एमएनसी है, उनके पास थाउजेंड्स ऑफ फर्नीचर्स हो सकते हैं। सो दिस इज नेचर ऑफ एसेट। अब अगर वी टेक दिस फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स, अब इस फर्नीचर्स एंड फिटिंग्स में वी कैन हैव टेबल्स, we can have chairs, we can have, let's say, sofa set. ये जो assets हैं, इसको भी हम और bifurcate कर सकते हैं. If we talk about table, this table can be for office reception. This table can be for canteen. This table can be for operations floor.
This table can be for office lobby, right? अब ऑफिस रिसेप्शन, कैंटीन, ऑपरेशंस फ्लोर, ऑफिस लॉबी, इसमें भी और ज्यादा बाइफर्केशन हो सकता है, जैसे कि हेड ऑफिस रिसेप्शन हो गया, या लेट्स से थाने ब्रांच ऑफिस रिसेप्शन हो गया, पुणे ब्रांच कैंटीन हो गया। इसीलिए while creating this asset, we will take this as office reception table. अब अगर ऑफिस रिसेप्शन में भी दो टेबल्स है, तो वी कैन टेक टेबल 1 एंड टेबल 2। फॉर नाउ वी विल जस्ट टेक टेबल, दिस इज फॉर हेड ऑफिस। Now this head office reception table is our asset, and this asset belongs to furnitures and fittings. Today is 27। अब asset class create करने के लिए we have some prerequisites। Okay, first prerequisite is account determination. Second prerequisite is screen layout rules. Third prerequisite is number range। अब account determination help करता है to identify which asset belongs to which GL account। Okay, account determination helps to identify asset class and their relevant GL account। अब next is screen layout rules। Screen layout rules are like field status variant। ये define करते हैं, it defines which field is mandatory, suppressed, and optional for creating asset master data। And number range defines the number range for asset master data। ओके, अब
जब हम एसेट अकाउंटिंग करते हैं तो देयर आर फ्यू जीएल अकाउंट्स जो हमें क्रिएट करने होंगे बिफोर पोस्टिंग द ट्रांजैक्शंस. Now, first GL account is asset purchase account, जिसको हम एपीसी अकाउंट भी बोलते हैं. Next is accumulated depreciation. अब do you know what is accumulated depreciation? नो सर। Okay. So एक एसेट पे लेट्स से देयर इज सम मशीनरी. अब ये मशीनरी परचेज हुई है इन द ईयर 2021. नाउ लेट्स से कि इन द ईयर 2021 इस मशीनरी पे डेप्रिसिएशन टोटल चार्ज हुआ था अराउंड 6,000 रुपीज. इन द ईयर 2022 it was 10,000. In the year 2023 it was again 10,000. In the year 2024 again 10,000, and year 2025 it is still running. तो अब तक जो भी डेप्रिसिएशन इस मशीनरी पे चार्ज हुआ है उन सब का टोटल मिला के वी कैलकुलेट accumulated depreciation. Now this accumulated depreciation is sum of 6,000, 10,000, 10,000 and 10,000. अब तक इस मशीनरी पे टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ है 36,000 and this is our accumulated depreciation. समझ गए इतना? यस सर। Okay. This is year and this is depreciation. Next account is depreciation account. जो individual depreciation लगेगा on our assets, for that we will create an account. Next is sale of asset. जब भी हम कोई asset को सेल करेंगे, कोई asset को बेच देंगे, we will have some amounts which we will receive. Right? हमारा कुछ revenue generate होगा, which is non-operational revenue. Fifth is profit on sale of asset. Sixth is loss on sale of asset. Seventh, we will create scrapping
ऑफ एसेट। अब कोई ऐसे एसेट भी होंगे जिसको हम बेच नहीं सकते, जिसको हमें डायरेक्टली स्क्रैपिंग करना पड़ेगा, जिसको हमें डायरेक्टली वैनिश करना पड़ेगा। तो उन एसेट्स के लिए हम स्क्रैपिंग ऑफ एसेट वाला अकाउंट क्रिएट करेंगे। अब जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं, तो हम उस एसेट को बैलेंस शीट में मेंशन करते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस में? बैलेंस असेसमेंट बैलेंस शीट, दिस इज एसेट। Accumulated depreciation is also balance sheet asset. Depreciation, अब depreciation का अकाउंट बैलेंस शीट में आएगा या प्रॉफिट एंड लॉस में? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में कौन सा साइड पे आता है? डेबिट साइड डेबिट साइड, विच इज एन एक्सपेंस। Sale of asset, this is profit and loss again, and it will be income, बिकॉज जब हम एसेट सेल करेंगे तब हमें उससे कोई इनकम आएगी। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट इज ऑल्सो P&L इनकम। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये कहाँ पे आना चाहिए? प्रॉफिट एंड लॉस प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस expense, and scrapping of asset, प्रॉफिट एंड लॉस एक्सपेंस correct. अब out of these 7 accounts, APC account and accumulated depreciation account को हम as a reconciliation account create करेंगे, meaning कि ये डेटा GL account में फ्लो करेगा। अब asset account is also a subsidiary ledger, जैसे हमने अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल देखा था, वैसे ही एसेट अकाउंट भी एक सब लेजर है। So we will create APC account and accumulated depreciation account as a reconciliation account. अब APC account will be individual account for each asset. Let's say अगर आपने मशीनरी परचेज की, आप मशीनरी के लिए अलग से APC अकाउंट क्रिएट करोगे। अगर आपने कोई व्हीकल परचेज की, आप उस व्हीकल के लिए अलग APC अकाउंट क्रिएट करोगे। एंड सिमिलरली हर एक एसेट के लिए यू विल क्रिएट एन इंडिविजुअल अकाउंट। Same thing goes for accumulated depreciation. You will create individual accounts for each asset. Now accumulated depreciation के लिए आप कॉमन अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो, बट आपको और अच्छा बाइफर्केशन मिले उस रीजन से आप हर एक एसेट के लिए सेपरेट सेपरेट accumulated depreciation अकाउंट क्रिएट करोगे। नाउ लेट्स से मशीनरी पे टोटल accumulated depreciation is 36,000. We have some other asset, let's say buildings. अब बिल्डिंग्स पे यू हैव अराउंड 1 लाख रुपीज या यू हैव अराउंड लेट्स से 30,000 rupees depreciation. Now total depreciation will become 66,000 rupees. Correct? 36,000 plus 30,000, which is equal to 66,000 rupees. अब if you create one accumulated depreciation account, तो आपको वहां पे डायरेक्टली 66,000 rupees रिफ्लेक्ट करेगा। बट इफ यू वांट टू सी accumulated depreciation फॉर ईच asset, देन उस केस में आप हर एक एसेट के लिए इंडिविजुअल accumulated depreciation अकाउंट क्रिएट करोगे। नेक्स्ट इज depreciation अकाउंट। अगेन दिस इज इंडिविजुअल अकाउंट फॉर ईच एसेट। नाउ सेल ऑफ एसेट्स, यहां पे आप कॉमन जीएल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो।
प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, अगेन यू कैन क्रिएट कॉमन जीएल अकाउंट, बिकॉज ये हमारा प्राइमरी बिजनेस नहीं है। ओके, जो कंपनी है उसका प्राइमरी बिजनेस एसेट सेल करना नहीं है, उसका प्राइमरी बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है। इफ यू आर कंसिडरिंग होंडा मोटर्स का प्राइमरी बिजनेस है मैन्युफैक्चरिंग, नॉट सेलिंग द एसेट्स। तो आप इसके लिए कॉमन जीएल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। फॉर स्क्रैपिंग ऑल्सो यू कैन क्रिएट कॉमन जीएल अकाउंट। Now let us go to SAP and let us see how we can create the asset class. अब हमने यहाँ पे एक पॉइंट मेंशन किया था, which is prerequisites to create asset classes. Now for asset accounting configuration, you can use ORFA. अब यहाँ पे हमारा फर्स्ट फोल्डर है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। In this organizational structure, you can see there is a folder called as asset classes. लास्ट सेशन में हमने रेफरेंस चार्ट ऑफ अकाउंट कॉपी किया था, इसका डिस्क्रिप्शन चेंज किया था एंड इसमें डेप्रिसिएशन एरियाज को एडजस्ट किया था। उसके बाद इस चार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन को हमने कंपनी कोड से असाइन किया था। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट विच इज एसेट क्लासेस। ओपन दिस फोल्डर। नाउ you have an option to define asset classes. Now, if you see, this option is on the fourth place, right? 1, 2, 3, and then fourth place पे we have asset class. Meaning कि ये asset class define करने से पहले हमें ये 3 चीजें define करनी पड़ेगी: account determination, screen layout rules, and number range. First, let us go to account determination. Click on new entries. Let's say our account determination is okay. फर्स्ट हम ये चेक करते हैं कि इसमें हम कितने नंबर्स ऐड कर सकते हैं या कितने कैरेक्टर्स हम इसमें ऐड कर सकते हैं। आफ्टर 8 यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ रहा है, मीनिंग कि हम इसमें 8 कैरेक्टर्स ऐड कर सकते हैं। इट कैन बी न्यूमेरिक और इट कैन बी अल्फा। अब ये जो कोड हम एंटर कर रहे हैं अकाउंट डिटर्मिनेशन के लिए, ये ऑलरेडी प्री डिफाइंड होगा बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्फ़िगरेशन। वी हैव अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड एज केडीएस डॉक्यूमेंट, जिसमें ये सारी चीजें डिफाइन होती है कि कैसा लॉजिक वी विल follow to create this account determination. We will take first letter of our company code and we will give the number 1 with zeros. H1 and 4 zeros. हमने टोटल 6 कैरेक्टर्स का अकाउंट डिटर्मिनेशन कोड क्रिएट किया एंड दिस इज फॉर फर्नीचर्स एंड fittings for HNMT. Press enter and save it. Go back. Account determination is completed. नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे स्क्रीन लेआउट रूल्स। अब इस स्क्रीन लेआउट रूल्स में आपको कहीं पे न्यू एंट्रीज का ऑप्शन दिख रहा है? नहीं। मीनिंग दैट वी कैन नॉट
क्रिएट अ स्क्रीन लेआउट रूल। हमें इस स्क्रीन लेआउट रूल से ही एक नया स्क्रीन लेआउट रूल कॉपी करना पड़ेगा एंड वी हैव टू आई एम सॉरी वी कैन नॉट क्रिएट अ न्यू स्क्रीन लेआउट रूल। जो प्री डिफाइंड स्क्रीन लेआउट रूल्स है उसी को कॉपी करके हम हमारे कंपनी कोड के लिए स्क्रीन लेआउट रूल क्रिएट करेंगे। नाउ लेट्स से this 3000, this is for furnitures and fittings. Select this, click on copy. अब we will change this code to H100 and press enter. An entry already exists with the same name. Let me just check. Okay. Now यहाँ पे already एक entry exist करती है तो we cannot use this code. What we will do is, let me go up. We will select this and one second. हम कोई और कोड डिफाइन कर देंगे यहाँ पे। Let's say HNMT, हम सेम कोड रखते हैं एज आर कंपनी कोड। Okay, number of copied entries is 1. Save this. अब हमने दो चीजें डिफाइन की। फर्स्ट इज अकाउंट डिटर्मिनेशन, सेकंड इज स्क्रीन सेकंड इज स्क्रीन लेआउट रूल्स। अब हमें और एक ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा विच इज नंबर रेंज। Our account determination was H1 4 zeros. Screen layout rule was HNMT. Now let us define number range. Data was saved. We will go back. Define number range interval. Company code is HNMT. Click on change intervals. We will give number range as 0, 1. From number, let's say 1, all zeros, 2, 1, all nines. Enter. Save this. Changes were saved. Now we created account determination, we created screen layout rules, we created number range. अब ये तीन चीजें required थी to create our asset class. Now we will create asset class. Remember कि asset class is nature of asset or we can say classification of asset. अब जो asset हमने consider किया था that was a table. For table, what asset class we will create?
फर्नीचर. furniture and fittings. Let's say यहाँ पे हम कोड लेते हैं which is HN. Okay, first let me check कितना डिजिट आ सकता है. 8 digits. Let's take HN 1 and 3 zeros. This is furnitures and fittings. Or we will copy this in short text as well. Furniture. अब इन एसेट टाइप हमें 3 ऑप्शंस मिल रहे हैं. अकाउंट डिटर्मिनेशन, स्क्रीन लेआउट रूल्स एंड बेस यूनिट. अब account determination which we created was H1 all zeros. Screen layout rule was HNMT. अब बेस यूनिट यानी कि इस एसेट के लिए या इस एसेट क्लास के लिए जो मेजरिंग यूनिट होगा वी हैव टू डिफाइन दैट इन दिस फील्ड. अब फर्नीचर्स को हम पर पीस कैलकुलेट करेंगे. सो वी विल ओपन दिस लिस्ट. देयर इज अ यूनिट कॉल्ड एज EA. If you see this, EA is for each, यानी कि each piece. Select this. Number range हमने create किया था 0, 1. Now status of AUC. AUC is asset under construction. Now a table is finished asset or asset under construction. असित. Table is a finished asset or asset under construction. फिनिश्ड असिस्ट. Finished asset, right? So हम यहाँ पे select करेंगे no asset under construction or summary management of AUC. If you have an asset which is under construction, let's say building, उस टाइम पे आप ये दो ऑप्शंस का यूज करोगे. ओके, अब एसेट क्लास डिफाइन करने के लिए इतनी चीजें काफी है. सेव दिस. An entry does not exist. Okay. All right. स्क्रीन लेआउट रूल्स यहाँ पे कॉपी नहीं हुए थे. Data was saved. We will try to define asset class once again.
number range is 01 and this is no asset under construction. Press enter. अब यहाँ पे description आ गया. Click on save. सर ये बेस यूनिट ई है क्या खाली? Base unit is unit of measure. अगर हम furnitures and fittings asset class define कर रहे हैं, अब हमें ये पता है कि furnitures में we have tables, we have chairs. अगर हमें इस tables, chairs को calculate करना होगा या count करना होगा, तो हम किस unit में इसको count करेंगे? That unit we have to define to SAP. Now EA stands for each, यानी कि each unit or each piece. This is each piece. अब when we define this, हम SAP को ये define कर रहे हैं कि for this asset class, जो भी assets इस asset class में आएंगे, वो assets per piece calculate होंगे. ठीक है? यस सर। Save this. Back. Again back. अब asset class हमने define कर लिया. We will close this organizational structure folder and we will go to the next step, which is integration with general ledger accounting. Open this. Now if you go here, assign GL accounts. यहाँ पे हमें chart of depreciation पूछ रहा है. What was our chart of depreciation? HN 1000। नहीं, that was account determination. Chart of depreciation हमने कल create किया था, right? हमने assignment की थी. It is HNMT. If I open this list, HNMT, chart of depreciation. इसको select करो and click on continue. अब यहाँ पे हम GL accounts assign कर सकते हैं. ठीक है, if I go in this account determination, अब यहाँ पे हमारा account determination है H1 all zeros. Furniture and fittings HNMT. Now in this we are getting two depreciation areas, area 1 and area 3. अब हमने टोटल 4 depreciation areas define किए थे, बट हमें सिर्फ 1 and 3 वाला depreciation area मिल रहा है because these area post in real time. जो बाकी दो depreciation areas थे उसमें हमने area does not post option select किया था. Now for this leading ledger 0L, I want to define accounts. I will select it. One second. अगर आप इस पे डबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस आएंगे टू डिफाइन योर अकाउंट्स. बैलेंस शीट अकाउंट, दिस इज एपीसी. देन इसके बाद यहाँ पे हमें और कुछ डिफाइन नहीं करना है. वी विल जस्ट डिफाइन दी एपीसी अकाउंट हियर. अब तक हमने इसका जीएल अकाउंट क्रिएट नहीं किया. वंस वी क्रिएट द जीएल अकाउंट हम यहाँ पे वैल्यूज ऐड कर देंगे. नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन. अब जब भी आप एसेट परचेज करते हो तो आप उस एसेट को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हो, right? Therefore, in balance sheet accounts, you have option of this APC. Now we will go to depreciation. Depreciation for leading ledger 0L. अब यहाँ पे you have
different types of depreciation: ordinary depreciation, special depreciation, unplanned depreciation. Now we will be using ordinary depreciation, यानी कि जो normal depreciation हम calculate करते हैं, that is called as ordinary depreciation. For that depreciation, हम यहाँ पे account assign करेंगे after creating it. Just one second. Okay. In this balance sheet accounts, we have to use balance sheet account APC, जहाँ पे हम asset account assign करेंगे. कॉल डिस्कनेक्ट हो गया था. यस सर। कहाँ पे हुआ था? पिछले सेट पे सर, मतलब इससे पहले आप जो कर रहे थे ना अकाउंट डिटर्मिनेशन। ओके. अब our account determination is H1 4 zeros. हम इसको सिलेक्ट करेंगे. We will go to balance sheet accounts. अब balance sheet में we have these tabs. First is acquisition account assignment. Second is retirement account assignment. Third is revaluation. Fourth is cost proportions not capitalized. And fifth is balance sheet accounts. अब इसमें से हम पहले दो टैब्स यूज करते हैं. इन द फर्स्ट टैब हम बैलेंस शीट अकाउंट यूज करेंगे फॉर एपीसी, यानी कि जो इंडिविजुअल एसेट अकाउंट्स हम क्रिएट करेंगे, वी विल असाइन दोज अकाउंट्स हियर. नेक्स्ट टैब में वी विल यूज लॉस, आई एम सॉरी, नॉट, जब हम एसेट रिटायर करेंगे एट दैट टाइम वी विल यूज दिस रिटायरमेंट अकाउंट विदाउट रेवेन्यू. नेक्स्ट इज दिस क्लियरिंग अकाउंट फॉर रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ एसेट. नेक्स्ट गेन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट, जो भी प्रॉफिट होगा हमें, दैट वी विल असाइन टू दिस जीएल अकाउंट. एंड अगर लॉसेस होता है तो वी विल क्रिएट अनदर जीएल अकाउंट फॉर लॉसेस. इसको हम अभी डिफाइन नहीं कर रहे. वंस वी क्रिएट आवर जीएल अकाउंट्स, यहाँ पे हम अकाउंट्स को असाइन करेंगे. लेट अस गो बैक. जस्ट वन सेकेंड. Okay, close this. Go to general valuation. Go to determine depreciation areas for asset class. अब यहाँ पे हमें अगेन मल्टीपल एसेट क्लासेस मिल रहे हैं. हमने हमारा एसेट क्लास क्रिएट किया था विच वाज HN100. This is for HNMT furnitures and fittings. Select this. Go to depreciation areas. अब जो डेप्रिसिएशन एरियाज हमने क्रिएट किए थे, वो सारे डेप्रिसिएशन एरियाज हमें यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं. अगर आप इस कॉलम पे देखो, दिस इज डीएक्टिवेशन कॉलम. एंड यहाँ पे ये सारे इंडिकेटर्स टिक किए गए हैं, यानी कि ये सारे डेप्रिसिएशन एरियाज डीएक्टिवेटेड है. वी विल रिमूव दीज indicators and we will go to layout. Click on this list या search icon. अब यहाँ पे we have this option 1000 depreciation on main asset number level. Select this. बाकी depreciation areas के लिए भी we will select 1000.
एंड प्रेस एंटर। अब ये फील्ड्स एडिटेबल हो गए फॉर द डेप्रिसिएशन एरियाज जो रियल टाइम में पोस्टिंग्स करते हैं। इफ यू go to this depreciation key, अब depreciation key is where we actually define कि हमारा एसेट कि हमारे एसेट पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होना चाहिए। नाउ वी विल ओपन दिस लिस्ट। We have standard provided depreciation keys, which is LINK and LINR. LINK is for straight line from acquisition value to zero without interest, and LINR is straight line from what is this some REM life to book value zero. We will select this one. Depreciation area 3 में भी we will select LINK. अब लीडिंग लेजर में हमें डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है फॉर IFRS, हाउ वी आर कैलकुलेटिंग बाय यूजफुल लाइफ और बाय परसेंटेज। दिस इज IFRS, दिस इज ICA। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट हो रहा है इन IFRS एंड इन ICA। आईएफआरएस का वो 10% हो रहा है अपना पूरा अमाउंट के ऊपर, और ये इंडियन कंपनी एक्ट के हिसाब से तो वो 5 साल के हिसाब से करते हैं। ओके, सो यहाँ पे भी हम सेम चीज डिफाइन करेंगे। फॉर IFRS इट इज 10%। 1 second, दिस इज यूजफुल लाइफ इन पीरियड्स नॉट परसेंट। ये वाला पार्ट हम कल फिर से डिफाइन करेंगे। फॉर नाउ जस्ट गिव इट एज 10। एंड इंडियन कंपनीज एक्ट के लिए दिस इज यूजफुल लाइफ ऑफ 5 years। ओके, प्रेस एंटर। जब हमने एंटर प्रेस किया, ये सेम वैल्यूज डेप्रिसिएशन एरिया 2 एंड डेप्रिसिएशन एरिया 4 में भी कॉपी हो गए, राइट। यस सर। दिस, ऑलराइट, सेव दिस। गो बैक। अब हम एसेट क्लास क्रिएट करने के लिए ट्राई करते हैं। टू क्रिएट एसेट क्लास, गो टू /n, एंटर, go to accounting, financial accounting, fixed assets, asset, now create, and AS01 asset. This is for asset master data. Select this. ये S01 में है, इसमें इंडिविजुअल एसेट ये होगा ना। Correct. Ab our asset class was HN1, all zeros. Just let me check. Our company code is HNMT. Asset class is HN1 000 and number of similar asset ये by default 1 आएगा।
Press enter. Information about last completed fiscal year is incomplete. अब हमें ये डिफाइन करना पड़ेगा कि जो लास्ट ईयर है वो कौन सा ईयर था। ओके, एसएपी को हमें ये बताना पड़ेगा कि हम लास्ट ईयर विच इज 2024 उस ईयर को हमने कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ वी आर इन ईयर 2025। एग्जिट। अब ईयर चेंज डिफाइन करने के लिए वी हैव पीरियोडिक प्रोसेसिंग। इस पीरियोडिक प्रोसेसिंग में वी हैव fiscal year change and we have year end closing. We will go to this year end closing FAA underscore CMP. Execute. यहाँ पे आपको कंपनी कोड दिख जाएगा। Now for this company code, we will go to legacy transfer. अब ये by default display mode में है। We will click this change icon. अब ये edit mode में आ गया। Click on create. Now transfer date. Generally, we will use the last day of financial year for this transfer date. अब जो फाइनेंशियल ईयर हम यूज कर रहे हैं दैट इज जनवरी टू दिसंबर, सो वी विल यूज 31st ऑफ दिसंबर 2024। प्रेस एंटर। नो फिस्कल ईयर वाज ओपन्ड फॉर लेजर 0L यूजिंग बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। एंटर अगेन। यहाँ पे एक लाइन क्रिएट हो गई फॉर द ट्रांसफर डेट। नाउ सेव दिस। ओके, गो बैक, ट्राई टू क्रिएट एसेट मास्टर वंस अगेन। अब हम एसेट मास्टर डेटा स्क्रीन पे आ गए। नाउ हियर वी विल डिफाइन आवर एसेट। अब जो एसेट हमें क्रिएट करना है दैट इज हेड ऑफिस रिसेप्शन टेबल, या वी कैन से टेबल फॉर हेड ऑफिस रिसेप्शन। अकाउंट डिटर्मिनेशन, हमने जो अकाउंट डिटर्मिनेशन एसेट क्लास को असाइन किया था सेम अकाउंट डिटर्मिनेशन यहां पर भी आ रहा है। क्वांटिटी इज ऑल्सो ईच पीस। प्रेस एंटर। नाउ यू कैन गो टू दिस टैब डेप्रिसिएशन एरियाज। अब यहाँ पे वी डिफाइंड दिस एज यूजफुल लाइफ फॉर 5 years and this periods we defined 10. We will save this. Asset 1 all zeros 0 is created. Now this 1 all 0 के बाद स्पेस देके आपको और एक 0 दिख रहा होगा, दैट इज सब एसेट नंबर। वी विल सी व्हाट दिस इज। अभी के लिए जस्ट अंडरस्टैंड कि दिस इज अ सब एसेट। नाउ लेट्स से अगर आपने एक मशीनरी परचेज की तो उस मशीनरी का मेंटेनेंस करने के लिए आपको और एसेट्स की जरूरत पड़ेगी, लाइक टूल्स। करेक्ट, दैट टूल्स इज योर सब एसेट। अब
जितने भी सब एसेट्स आपको एक एसेट के अंडर क्रिएट करने हैं, आप उतने सब एसेट्स के लिए नंबर डिफाइन करोगे एंड उतने सब एसेट्स मेन एसेट के अंडर क्रिएट करोगे। ठीक है? यस सर। ओके, आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग।